जय जगन्नाथ। So, good morning to all of you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। So, এই ସେକ୍ସନରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା important questions to aldehyde and ketone. I think Shravani and good morning Deepak. Sorry for this interpretation. दुईटा लाइव क्लास स्टार्ट होगी दुईटा बंद हो गला। ठीक अच्छे, सॉरी अगेन फॉर दिस इश्यू। तो आम देखुले व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एटा रही तुम सीएचएसई। अरे CHSE 2018 रो क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। CHSE 2018 रो क्वेश्चन। एसीटोन प्रोपेन 2NH। सो आम देखी ना ये प्रोडक्ट कौन आसो CH3CH। पे मैंने ये क्वेश्चन 2018 आसला। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH को जो आम हाइड्रोलिसिस करवा पर्टिकुलरली व्हाट वी विल गेट CH3C डबल बॉन्ड CH3C yes OH CH2, so which will be converted into tautomere, that is CH3 CO CH3 एसीटोन आसो आंसर। एसीटोन बहुत जन आंसर कहते एंड ऑल द आंसर आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी 2 नंबर क्वेश्चन से चैप्टर ही। द क्वेश्चन इज between formaldehyde and acetaldehyde formaldehyde and acetaldehyde
formaldehyde and acetaldehyde, which gives Cannizzaro reaction. आमर प्रोडक्ट भी कौन होबो फर्दर which gives Cannizzaro reaction. अब प्रोडक्ट भी कौन होबो फर्दर नवीन कहले एसिटाल्डिहाइड श्रावणी कहले फॉर्माल्डिहाइड यस श्रावणी यू आर राइट सो फॉर्माल्डिहाइड प्रोडक्ट दबो फॉर्माल्डिहाइड जेतोले हमर रिएक्शन करिवो Cannizzaro रिएक्शन पे हमें नोचे concentrated NaOH it will give rise to the product that is your HCOONA plus CH3OH methanol 2 moles of HCONA एटा आस्थिला तुमरो CHSE 2018 रो क्वेश्चन CHSE 2018 रे ए चैप्टर रो बहुत गुडाय क्वेश्चन आस्थिला ओके नेक्स्ट जीवा 3 नंबर क्वेश्चन को the question is what happens when calcium acetate is dry distilled what happens when calcium acetate is dry distilled कैल्शियम एसिटेट को जितेबाला में ड्राई डिस्टिल करवा में कौन पाइबा प्रोडक्ट 2018 ही क्वेश्चन CHSE कारण ए चैप्टर सरीला पर ए चैप्टर रा इंपोर्टेंट रिएक्शन गुडा को भी रखी देथिबा बहुत भलो हबो सो दैट तुम्हारा कौन हो ना एग्जाम फियरनेस रहिबो ना प्रोपेन 2ONE एसीटोन कैल्शियम एसिटेट CH3CO CH3 further CH3CO OOCA plus CaOO C double bond O C double bond O CH3 CH3 this will give rise to कौन हो जी when calcium acetate is dry distillated what is the product by which product is obtained the answer will be your acetone ठीक है acetone होगा आंसर acetone will be obtained as a product very good समस्त acetone देथिबारु नेक्स्ट 4 नंबर जीवा 4th नंबर क्वेश्चन
बुझीपारनी कि गोटे असुविधा होती सॉफ्टवेयर को रिलेट करी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन होची an organic compound ना सॉरी पिला मैंने टिके रो मुझे ये वन ड्राइव वन नोट बाहर कर बस। So the question is fourth number question is an organic compound बहुत important question एटा गोटे long question भी an organic compound capital A with molecular formula C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4 DNPH dinitrophenyl hydrogen with 2,4 DNPH and gives yellow precipitate on hydroxide. Yellow precipitate on hydroxide. Hydroxide रो presence रे yellow precipitate दिए। तापरे क्वेश्चन रही it neither reduces tolerance reagent, it neither reduces tolerance reagent nor the failing solution. ना ये टॉलरेंस रिएजेंट सहित ट्रीटमेंट कले किसी प्रोडक्ट दबो ना ये फेलिंग सॉल्यूशन सहित ट्रीटमेंट कले ये किसी प्रोडक्ट दबो। नेक्स्ट ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन with formic acid it gives a carboxylic acid B having molecular formula C7H6O2. Identify the compound A and B. Identify the compound A and B. एभला क्वेश्चन आसला CHSE 2018 रे। क्वेश्चन को बहुत भल भाव ध्यान सहित देखीदबा जे क्वेश्चन रे कौन रही ना ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए हूँ तुमर कौन कही C8H8O ठीक अच्छे C8H8O है माने तार अर्थ ये बेंजोइक एसिड की आंसर सर डोंट नो मु जानी नहीं देखिबा ठीक अच्छे। तापरे ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विथ 2,4 DNPH and gives yellow precipitate on hydroxide
क्वेश्चन टा ध्यान देकी देख येलो प्रेसिपिटेट ऑन हाइड्रोक्साइड तार अर्थ एटा आयोडोफॉर्म रिएक्शन फ्रॉम दिस यू कैन कंफर्म दैट दिस इज ए आयोडोफॉर्म रिएक्शन आउ एटा तुमर जेहेतु 2,4-DNPH सहित ट्रीटमेंट कले प्रोडक्ट दूची दैट टू ऑरेंज प्रोडक्ट orange product yes orange red precipitate तो ये हमें कौन कन्फर्म हवा व्हाट वी विल से हियर दैट ये जो प्रोडक्ट आछि दिस थिंग इज कंप्लीटली वी कैन से दैट एटा तुमरो इधर एल्डिहाइड बा कीटोन हेथिबो एठु हमें कन्फर्म हे गले इधर एल्डिहाइड थिबो किंबा कीटोन थिबो देयर आर टू चांसेस दैट इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी ए कीटोन कारण एटा ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दबा जतले 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन सहित ट्रीटमेंट करबा नो कीटोन हेबो वेरी गुड एटी नेक्स्ट स्टेप रे कोआ गला जे इन द नेक्स्ट स्टेप इट हैज बीन टोल्ड दैट इट नेदर टॉलरेंस रिएजेंट सहित ना रिड्यूस हबो ना फेलिंग सॉल्यूशन सहित तार अर्थ एटा कोन गोटे एल्डिहाइड सो ही कन्फर्म्ड दैट इट इज ए एल्डिहाइड जे कि एटू आयोडोफॉर्म टेस्ट देला तार अर्थ एटा गोटे CH3CO ग्रुप थिबो एठी ठीक अच्छे किंतु ये भी समस्या रही जाइए नेदर टॉलरेंस रिएजेंट नॉर ना तुम्हारा टॉलरेंस रिएजेंट सहित ना सी फेलिंग सॉल्यूशन सहित किंतु ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड मुझे फॉर्मिक एसिड लिखिदेली विथ क्रोमिक एसिड हम ये सॉरी ये जगह हम क्रोमिक एसिड मु फॉर्मिक एसिड लिखिदेली क्रोमिक एसिड माने Cr2O3 ठीक अच्छे एटा एल्डिहाइड हम सत किंतु एठी भी समस्या रही कौन समस्या रही जे एल्डिहाइड जदि हम CH3CO ग्रुप केमती हम कीटोन आसो येलो प्रेसिपिटेट हम ठीक अच्छे ना ये टॉलरेंस रिएजेंट सहित रिड्यूस हम ना ये फेलिंग सॉल्यूशन सहित हम ताले एल्डिहाइड निहाती भाव आसो किंतु जितोले तुमर ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड जितोले आमे करूचे वी गेट ए कार्बोक्सिलिक एसिड आमे गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड एठी गोटे पाउचे एंड एठू आमे देखिबा सो हमर C8H8O को जितोले आमे ऑक्सीडाइज करोचे व्हेन वी ऑक्सीडाइज C8H8O in presence of chromic acid so we are getting C7H6O2 तो तार अर्थ आम C7H6O2 रु आम जदि COH बाहर करदेवा कौन बड़का COH बाहर करदेले व्हाट विल रिमेन देयर आफ्टर COH जदि बाहर जीवा आ कौन रहिबो ना C6 रहिबो H5 रहिबो सो फिनाइल ठीक है C6H5COOH हम ओके C6H5COOH सो आमे जो देखिबा C6H5COOH माने एटा तुमरो एटा गोटे कौन है पारे दैट येलो प्रेसिपिटेट जो दोची दैट मीन्स येलो प्रेसिपिटेट माने एटा गोटे तो निहाती भाव आयोडोफॉर्म टेस्ट दबा ऑब्वियसली नो नो एटा एटा मोर भूल हे गला एटा पिला माने गोटे भूल हे गला ई जगह रे येलो प्रेसिपिटेट माने आयोडोफॉर्म रिएक्शन होबनी कारण एठी तुम जदि तुमर आयोडीन आउ NaOH थांदा ताहले आयोडोफॉर्म रिएक्शन हेतांदा येलो प्रेसिपिटेट on heating with iodine in presence of sodium hydroxide yellow precipitate on heating with iodine in presence of sodium hydroxide
ना ठीक अच्छे येलो प्रेसिपिटेट ऑन हिटिंग विथ एडे मु छाड़ी दीची ऑन हिटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड येलो प्रेसिपिटेट ऑन heating with iodine and sodium hydroxide with iodine and sodium hydroxide ताहले इठु हमर पाइबा दैट इट इज ए आयोडोफॉर्म रिएक्शन दबो सो इठु हमर जेंति आयोडोफॉर्म रिएक्शन दबो एज यूजुअल तो व्हिच इज ए क्वाइट डिफिकल्ट समस्या रही वाला आयोडोफॉर्म दबो पुनी एडी तो आम बुझीगले जे यहाँ गोटे आल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट बा फेलिंग सॉल्यूशन सहित ना सी रिड्यूस होची ठीक अच्छे ताहले आमे जे देखिबा C6H5COH then it will be एटी कौन आसीबो C6H5 C6H5 माने तो यहाँ गोटे फिनाइल ग्रुप हाँ रेड प्रेसिपिटेट फेलिंग सॉल्यूशन रे हुए जे फेलिंग सॉल्यूशन सहित से रिएक्ट करूनी किंतु ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दबा जेतले 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन सहित ट्रीटमेंट करिवो नवीन ठीक अछि सो ए क्वेश्चन दा C6H5 ताले एटा कोन हेतिबो इधर गोटे अल्कोहल हेतिबो CH2OH बा गोटे aldehyde भी हेतिबो C6H5CHO which will give rise to the product that is C6H5COH ठीक अछि एटा ताहले बेंजाल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ क्रोमिक एसिड विल प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड तो यहाँ तो आमर पलि आसला देखा जदि आम C8H8O अच्छी सॉरी C8H8O अच्छी ताहले गोटे हाइड्रोजन ये कम रही जाइए C8H8O रही सो इट विल बी C6H5CH2OH CH2COH so it will be C6H5CH2COCHO देखिला काउंट कल 6 7 1 8 5 2 7 1 8 so it will be C6H5CH2CHO that is your no aldehyde it neither sorry भूल होगला it neither reduces with tolerance reagent or Fehling solution that means it is a ketone भूल होगला सॉरी दैट इज इट इज ए कीटोन हम ये भी गोटे भूल होगला जे ये रिएक्शन करनी रिएक्शन जदि न करुच्ची ताहले एटा गोटे कीटोन हो सो आउ थे मुझे कही रखुच्छी देख ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जेहेतु ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट सहित ट्रीटमेंट कला सो इट मे बी आल्डिहाइड और कीटोन तापर जो येलो प्रेसिपिटेट देला यहाँ आयोडोफॉर्म रिएक्शन हम तार अर्थ ये बुझीजा CH3CO ग्रुप थी फर्दर यहाँ गोटे कीटोन हम पुणी ये जो क्रोमिक एसिड सहित आम जो ट्रीटमेंट कले आम ये C6H5COH ग्रुप पाइले सो इट मे बी योर ये जो प्रोडक्ट रहा रिएक्शन रिएक्टेंट रहा दैट मे बी CH3CO C6H5 काउंट कल टोटल कार्बन 6 7 1 8 हाइड्रोजन 5 3 8 ऑक्सीजन गोटे राइट इट इज ए कीटोन ठीक अच्छे फेलिंग्स रिएक्शन हेनी माने कीटोन हम राइट राइट थैंक यू श्रावणी सो कीटोन हम सो ये आम कन्फर्म हो गले जे A इज इक्वल टू योर एसिटोफेनॉन B इज बेंजोइक एसिड प्लस आउ तुम कौन आसो या पुणी आम एसिडिक प्लस एसिडिक एसिड CH3COOH ठीक अच्छे यहाँ एक्सट्रा यहाँ तुम कहुई तो आम ये कन्फर्म हो गले जे ए हूँ तुम कौन ये हूँ तुम एसिटोफेनॉन सो आम थ्रू आउट द यहाँ रफ वर्क करदे तापर थ्रू आउट दिस सेक्शन वी विल गो फॉर द रिएक्शन पार्ट रिएक्शन रे कौन लिखा दैट A इज इक्वल टू कौन रही तुम C6H5COCH3
पुणी B कौन रही B इज इक्वल टू C6H5COOH A react with आम ये एक्सप्लेनेशन भी करिवार अछि A reacts with 2,4-dinitrophenyl hydrazone 2,4-DNPH बीटा बेंजोइक एसिड है सर राइट बीटा बेंजोइक एसिड है A reacts with 2,4-dinitrophenyl hydrazine to produce कौन हम this is your acetophenone to produce acetophenone phenyl 2,4-dinitrophenyl hydrazone acetophenone 2,4-dinitrophenyl hydrazone क्वेश्चन को ध्यान रे देखिया को पड़ियो मु भी प्रिपेयर हेतिले किंतु स्टिल मु भूल कर देली सो एसिटोफेनोन 2,4-dinitrophenyl hydrazone ताले एटी रिएक्शन कोन रहइबो व्हाट इज द रिएक्शन बिहाइंड दिस C6H5 बेंजीन रहइबो CH3 रहइबो देन C डबल बॉन्ड O प्लस 2,4-dinitrophenyl hydrazone दिस इज NH2 तार 2 पोजीशन रे NO2 4 पोजीशन रे NO2 so this is 2,4-dinitrophenyl hydrazone but 2,4-DNPH या कुछ जेतबेला में रिएक्शन करेबा further the product will be this is your benzene CH3 then C double bond N then here also benzene NO2 ADB NO2 so the product is acetophenone 2,4-dinitrophenyl hydrazone ओके नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट रिएक्शन कोन थिला जे ए जेतोला में आयोडीन आउ OH NaOH एटा this will give rise to the orange precipitate this will form the orange precipitate ए को जेतोला में आयोडीन आउ NaOH सहित ट्रीटमेंट करथिले हमें येलो प्रेसिपिटेट पाउथिले सो व्हेन A is treated with iodine we get yellow precipitate ए को जेतोला में आयोडीन सहित ट्रीटमेंट करथिले हमें येलो प्रेसिपिटेट पाउथिले So A means your C6H5COCH3 this will be your C6H5COCH3 that is acetophenone ताकू जेतबेला हमें ट्रीटमेंट करथिले का सहित ना आयोडीन आउ NaOH सहित हमें कोन पाउथिले प्रोडक्ट फर्स्ट द प्रोडक्ट विल बी CHI3 iodoform plus C6H5COONA will be the product. So we are getting the yellow precipitate form that is your iodoform. So this is the yellow precipitate part. Which is the iodoform. So we can say that 80 tomorrow good morning Shubham 80 hamara acetophenone react with iodine to produce iodine in presence of NaOH to produce yellow precipitate of iodoform and this is your sodium benzoate further tomorrow थिला जे A को जेतबेला हमें ऑक्सीडेशन करथुले हमें B पाउथले so C6H5CH2 CH3 upon oxidation in presence of chromic acid was produced C6H5COOH benzoic acid plus acetic acid benzoic acid होची तुम्हारा ताले प्रोडक्ट A B आउ एटा होची तुम्हारा प्रोडक्ट A इज इट क्लियर बुझी पारला समझते थ्रू आउट द रिएक्शन
बहुत टफ थिला टिपिकल थिला रिएक्शन टा आउ तुमर नेम रिएक्शन रही कैनेजर रिएक्शन आसला व्हाट इज कैनेजर रिएक्शन ठीक है सो इफ वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैनेजर रिएक्शन कैनेजरस रिएक्शन कौन रही ठीक अच्छे ये क्वेश्चन आसला सीएचएसई 2016 इवेन बहुत थर ये क्वेश्चन आसी चैप्टर सब इंपोर्टेंट रिएक्शन माने कैनेजर रिएक्शन जदि हम देखा लॉन्ग क्वेश्चन नथिला एटा जस्ट तुमरो शॉर्ट क्वेश्चन रे थिला बस एटा शॉर्ट क्वेश्चन रे थिला तुम याकू एक्सप्लेनेशन निजे करि नबो जेतु गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन थिला तुमरो the precipitate formed when an aldehyde react with failing solution is this फेलिंग सॉल्यूशन सहित जो गोटे आल्डिहाइड ट्रीटमेंट होता से को प्रकार प्रेसिपिटेट पाउथिले एटा आछि तुमरो 2014 रो क्वेश्चन रेड प्रेसिपिटेट वेरी गुड श्रावणी रेड प्रेसिपिटेट हवा आंसर विल बी रेड प्रेसिपिटेट दैट इज Cu2O ठीक अच्छे मो रिएक्शन जाऊनी जेहेतु मु ऑलरेडी कर देछि आई एम जस्ट गोइंग इन द डिटेल्स क्वेश्चन सेक्शन कौन कौन आसी थाए फर्दर जब देखा 2014 पुणी आउे क्वेश्चन आसाला मिक्सचर ऑफ एटा लॉन्ग क्वेश्चन थिला तीनटा मिसिकी तीनटा शॉर्ट क्वेश्चन मिसिकी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन होता मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसिटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट is heated what happens further what happens to the reaction रिएक्शन कौन हम वेरी गुड श्रावणी क्यूप्रस ऑक्साइड हम रिएक्शन टी कौन हम जो आम कैल्शियम एसिटेट आउ कैल्शियम फॉर्मेट को हिट करवा
कौन आसीबा प्रोडक्ट एटा 2014 रे आस्तिला पुनी acetaldehyde product होगा सर very good श्रावणी the product will be acetaldehyde acetaldehyde plus CaCO3 नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी जे फिनाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड फिनाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड in ether solution is treated with carbon dioxide एटा कार्बोक्सिलिक एसिड रो क्वेश्चन टा सॉरी हो मु लिखित देलेनी करि दोछि is treated with carbon dioxide and the product is hydrolyzed with dilute acid जेतु मु क्वेश्चन टा लिखि देलेनी तो मु यार सॉल्यूशन टा करि दोछि बट इट इज नॉट फ्रॉम aldehyde ketone एटा तुमरो कार्बोक्सिलिक एसिड रो जेतु सेही क्वेश्चन सेठी थिला आई जस्ट थॉट इट इज aldehyde ketone क्वेश्चन फिनाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड माने C6H5 MgBr को जेतबेला में CO2 सहित ट्रीटमेंट कले व्हेन वी ट्रीट विथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड in presence of dry ether our product the product will be your particular a case रे there will be a polarization jadwara iti kon haba the charge will be transferred here and it will be delta plus delta it will be delta minus eta delta plus so o pakhre jaigi tumara mgbr attack karibo and C6H5 plus CO plus C will be attacked here माने C6H5 C को attack करियो कार्बन को so as a result we will get the product that is C6H5 C double bond O O MgBr okay C double bond O जो थिला O पाखरे सेटा सिंगल बॉन्ड हे गला आ एठी MgBr लागिला फर्दर ताको जेतोला में हाइड्रोलिसिस कले इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड तो ये तुम्हारा हाइड्रोलाइज करिया द्वारा इठी H हला इठी OH हला so we got the product that is C6H5COOH benzoic acid plus MgOHBr magnesium hydroxyl bromide ओके सो इटा कार्बोक्सिलिक एसिड रो क्वेश्चन टा भूल रे मोइटे लिखि देली ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा toluene is treated with chromyl chloride in CCl4 carbon tetrachloride and subsequent treatment with water produces a product
Identify the product. Very good. Shravani. एटा को प्रकार रिएक्शन एटा भी तुमरो CHSE 2014 रु आस्थिला डाउस तुमरो इटार्स रिएक्शन तो ये हमारा प्रोडक्ट आसीबो बेंजोइक एसिड. Okay, so the product will be benzoic acid. Next question jiba. Next question is, when a solution of formaldehyde and KOH is heated, it will give which product? It will give which product? It has still applied CHSE 2013 question. Methane. Wrong answer. मिथेन हम मत लगुनि मिथेन हम बोलिकी क्वेश्चन टाक टे बुला माने घुरा है पकाई आउ कि नुह जस्ट घुरा है पकाई पड़ी. मिथेन हबनी के कहि परिबो प्रोडक्ट कोन हबो? What is the product in this case? Okay, let me draw the product. एटा तुम फॉर्माल्डिहाइड रही HCHO तो KOH सहित माने कॉन्सेंट्रेटेड KOH बा बेस सहित ट्रीटमेंट करिया द्वारा NaOH सहित ट्रीटमेंट कले जेमती प्रोडक्ट आसला इट भी KOH सहित ट्रीटमेंट कले से भलिया. सो इट इज योर कैनिजोरो रिएक्शन द प्रोडक्ट विल बी HCOOK ONA थिला OK प्लस CH3OH मिथानॉल. सो मिथानॉल आसीबो प्रोडक्ट एज वेल एज पोटासियम फॉर्मेट हम प्रोडक्ट. बुझीपार से सोडियम सब बड़े आम नहीं करुले कि थर पोटासियम नहीं अच्छी रिएक्शन रे. बुझीपार समस्ते. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा that what happens when acetaldehyde is reacts with iodine in NaOH solution? Reacts with iodine in NaOH solution.
Give equation. एटा आसला तुमर CHSE 2013 2013 रो क्वेश्चन जेतेबेले आम एसिटाल्डिहाइड को आयोडीन आउ NaOH सहित ट्रीटमेंट करबा आम कौन पाइबा प्रोडक्ट what will be the product if we treat with एसिटाल्डिहाइड जेतेबेले आयोडीन आउ NaOH सहित ट्रीटमेंट करा जिवो कोन आसीबो प्रोडक्ट सोडियम फॉर्मेट वेरी गुड आउ कोन आसीबो एटा आयोडो फॉर्म रिएक्शन पिले माने CH3CO sorry HCONA the product will be HCOONA plus methanol so methanol and sodium formate sorry iodoform भूल कह देली methanol हबनी iodoform होबो this is your iodoform reaction and sodium formate very good श्रावणी next question जिबा next question होची what happens when एटा ही गला which of the following will not react with ammonical solution of silver nitrate and the options are acetylene, acetone, acetaldehyde, formic acid. कह दिए acetylene means CH triple bond CH. This is your acetylene. कोटा हवा आंसर एसीटोन माने CH3COH CH3COCH3 एसिटाल्डिहाइड CH3CHO फॉर्मिक एसिड SCOH फॉर्मिक एसिड एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट माने टॉलरेंस रिएजेंट एटा आस्तिला तुमरो CHSE 2012 रो क्वेश्चन एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट माने तुमरो एटा होछि टॉलरेंस रिएजेंट तो ए भितरु कोटा टॉलरेंस रिएजेंट सहित रिएक्ट करिवो नाही एसिटाल्डिहाइड तो करिवो फॉर्मिक एसिड
फॉर्मिक एसिड भला केमती करिवो एसिडटा बी एसीटोन ही हम वेरी गुड ताहले तुम मान भितर प्रश्न उठो सर एसिटिलिन केमती करिवो बहुत बढ़िया क्वेश्चन एसिटिलिन को जितेबाला आम हाइड्रोलिसिस करदबा हाइड्रोलाइज करदेले कौन पाइबा आम CH3CHO एसिटाल्डिहाइड पाइबा सो ये आमर पाइबा प्रोडक्ट HgSO4 प्रेजेंस रे H2SO4 प्रेजेंस रे हाइड्रोलिसिस कले एसिटाल्डिहाइड पाइबा जोड़ा तुम टॉलरेंस रीजन सहित रिड्यूस हो पार फॉर्मिक एसिड जदि आम देखा फॉर्मिक एसिड खास करी कौन हम ना SCOOH सॉरी फॉर्मिक एसिड SCOOH फॉर्मिक एसिड को जिते आम ट्रीटमेंट करदे सॉरी LiLS4 निकेल प्रेजेंस रिडक्शन करदे वी विल गेट HCHO फॉर्माल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड पुणी आउथरे एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सहित ट्रीटमेंट करिहबो सो एगुड़ाक इनिशियली रिएक्टेंट हिसाब से थी सहित आम कि एक्सट्रा ऐड करिया को पड़ो जहाँद्वारा आम आल्डिहाइड पाइबा से आल्डिहाइडटा तुम टॉलरेंस रिएजेंट सहित रिएक्ट करिकी सिल्वर मिरर दब किंतु एसीटोन केबे भी हेले दब नाही एज इट इज ए कीटोन नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन electrophilic substitution reaction in benzaldehyde takes place at which position and the options are एटा तुम CHSE 2012 क्वेश्चन and the options are ortho position बेट 2 रही पारा पोजिशन बा गुड मॉर्निंग लवकुश गुड मॉर्निंग श्रावणी गुड मॉर्निंग शुभम नेक्स्ट आसी मेटा पोजिशन फोर्थ आसी तुम ऑर्थो एंड पारा पोजिशन ऑलरेडी देखीचे एटार आंसर हम लास्ट क्लास रे आम वीडियो देखते दैट दिस विल बी एट ऑर्थो पोजिशन राइट एटा मेटा पोजिशन दब अर्थ कही दूसरी क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजाल्डिहाइड विथ HCN बेंजाल्डिहाइड विथ HCN एंड द ऑप्शंस सॉरी ऑप्शन कौच ये तुम CHSE 2012 क्वेश्चन बेंजाल्डिहाइड को तुम कौन हम प्रोडक्ट HCN सहित ट्रीटमेंट कले व्हाट इज द प्रोडक्ट फर्दर बेंजाल्डिहाइड cyanohydrin वेरी गुड नवीन नवीन ये कही सारे द प्रोडक्ट विल बी बेंजाल्डिहाइड cyanohydrin OH CNH so it is your बेंजाल्डिहाइड cyanohydrin
नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची तुमर और लास्ट दुईटा रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेम द प्रोडक्ट सी नेम द प्रोडक्ट सी इन द गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट सी को नेम करने को कही एंड फर्स्ट वन इज C6H5CH3 upon oxidation give rise to compound B sorry A which upon reacting with NaOH produces B upon treatment with soda lime NaO plus CO give rise to C कौन हम प्रोडक्ट एटा गोटे रिएक्शन ये रही जाइए लास्ट रिएक्शन जोटा तुम तुम्हें आग ए कौन हम कह मत ए कौन हम व्हाट इज द प्रोडक्ट इन ए इज योर बेंजाल्डिहाइड बस ए हम तुम बेंजाल्डिहाइड एसिटोफेनोन हेनी श्रावणे सो C6H5CH3 माने टॉलुइन को जो आम ऑक्सीडाइज करवा इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2 and CCl4 carbon tetrachloride we will get benzaldehyde ताकू जो आम ए पलि आसला ताकू जो NaOH सहित ट्रीटमेंट करिया आम कौन पाइबा प्रोडक्ट NaOH सहित बेंजाल्डिहाइड को NaOH सहित ट्रीटमेंट कले कौन आसबा प्रोडक्ट এই রিয়াকশনটা হবে তোমার কানেজর রিয়াকশন
कौन आसीबो प्रोडक्ट बेंजानल सोडियम बेंजोएट वेरी गुड बेंजानल एवं सोडियम बेंजोएट आसीबो प्रोडक्ट so the product will be your benzene COONA that is sodium benzoate plus आउ गोटे प्रोडक्ट आसीबो this is CH2OH so sodium benzoate को जेतबेला हमें ट्रीटमेंट करिवा when we treat sodium benzoate बेंजानल को किछि ट्रीट कले किछि प्रोडक्ट आवश्यक सोडियम बेंजोएट को जेतबेला हमें NaOH और CaO that is soda lime mixture of NaOH और CaO को हमें कहबा सोडा लाइम से ततले हमें ट्रीटमेंट करिवा we will get the product that is benzene मन रखता ए जो सोडियम बेंजोएट को जेतले हमें NaOH और CaO से तो ट्रीटमेंट करिवा we will get benzene plus Na2CO3 benzene plus Na2CO3 as product ठीक अछि एई सेक्शन ता तुमे बुझी नथिबो किंतु एबे मन रख दियो जे दिस इज A दिस इज B दिस इज C and C is the benzene is it clear बुझी पारलो एटा तुमरो CHSE 2011 रो क्वेश्चन CHSE 2011 रो क्वेश्चन 2011 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा लास्ट क्वेश्चन that what a question कोडा गला identify X and Y and name the reaction X and Y and name the reaction and the question is your 2C6H5CHO plus concentrated NaOH will give rise to X plus Y कौन हम प्रोडक्ट X एवं Y कौन हम एटा भी आस्तिला CHSE 2011 रे benzyl alcohol and sodium benzoate बहुत बढ़िया आंसर benzyl alcohol that is CH2OH plus sodium benzoate ऑलरेडी हमें किस समय आगुरे बेही कले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सेम क्वेश्चन सर राइट सेम क्वेश्चन थिला नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज रोजेनमॉन्ड रिएक्शन एटा तुमे जानिछो व्हाट इज रोजेनमॉन्ड रिडक्शन रिएक्शन व्हाट इज रोजेनमॉन्ड रिएक्शन एटा 2011 रे आस्तिला केवल जानि तुमे जानिछो सो मु ए क्वेश्चन टा को आंसर करू नाही नेक्स्ट क्वेश्चन अछि एटा लॉन्ग क्वेश्चन how is acetaldehyde prepared from calcium salt of organic acid
Name a test বা suggest a test to distinguish. बढ़िया क्वेश्चन एटा अछि to distinguish between acetaldehyde and formaldehyde. Sorry, এটা full stop ରହିବ. Next, what happens? How does it react with? How does it react with? React with dilute NaOH पुणी आसुची तुमर बिट 2 रे टॉलेंस रिएजेंट NaHSO3. एटा गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहया गले CHSE 2011 रे आस्थिला किंतु एबे एई चैप्टर रो लॉन्ग क्वेश्चन आसे ने पिला माने जहा से ओनली शॉर्ट क्वेश्चन ही आसे बा जदी आसीबो चेन रिएक्शन को बेस करी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो. एसिटाल्डिहाइड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड रो हमें केमदी प्रिपेयर करि परिबा. हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम calcium salt of organic acid? By dry distillation. Yes, by means of dry distillation. So हमारा CA बोलेला कैल्शियम एसिटाल्डिहाइड काउ ड्राई डिस्टिलेशन करिवा CH3CO OOCA plus CaOOCOH ऑर्गेनिक केवल रिएक्शन लिखिदेले जथेष्ट एंड हीट करिवा द्वारा वी विल गेट CH3CHO plus 2 moles of CaCO3. Okay, so it is about acetaldehyde हेगला. Acetaldehyde is prepared from calcium acetate and calcium formate. The dry distillation of calcium acetate and calcium formate will give rise to acetaldehyde and calcium carbonate. एटा तुम्हें लिखि दबो. तापरे suggest a test to distinguish between acetaldehyde and formaldehyde. Next point देखि लिखिबो acetaldehyde and formaldehyde can be distinguished by कौन हबो बहुत सारा टेस्ट रही. दुईटा टेस्ट गोटे इंपोर्टेंट टेस्ट रही. acetaldehyde and formaldehyde can be distinguished by को टेस्ट तुम्हें कहबो मु कहबिनी. फर्दर dilute NaOH, टॉलेंस रिएजेंट NaHSO3. फॉर्माल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH सहित ट्रीटमेंट करवा से सी आल्डोल कंडेंसेशन दब. डाइल्यूट NaOH सहित ट्रीटमेंट कले वी विल गेट द आल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. सो द प्रोडक्ट विल बी तुम्हें कहबो मु कहबिनी CH3COH को रिएक्शन द्वारा हमें डिस्टिंग्विश कर परिबा प्लस टॉलेंस रिएजेंट 2AgNH3 whole twice OH bid 3 रे acetaldehyde react with NaHSO3 sodium bisulfate.
तो डाइल्यूट NaOH सहित ट्रीटमेंट करने द्वारा कौन आसो प्रोडक्ट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हिच टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट कारण फॉर्माल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट दबनी किंतु एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट दब ठीक अच्छे ये डाइल्यूट NaOH सहित ट्रीटमेंट कले आम कौन पाइबा प्रोडक्ट वी विल गेट द आयोडोफॉर्म टेस्ट और aldol कंडेंसेशन और कानिजारो रिएक्शन aldol कंडेंसेशन फॉर्माल्डिहाइड दबनी किंतु एसिटाल्डिहाइड दब और कैनिजारो रिएक्शन ठीक अच्छे नेक्स्ट विल बी योर ये प्रोडक्ट आसो CH3 COH CH CH2 CHO so beta hydroxyaldehyde will be the product if we react with acetaldehyde with dilute NaOH तापरे तुम्हारा टॉलरेंस रिएजेंट बीटा हाइड्रोक्सीआल्डोल वेरी गुड फॉर द टॉलरेंस रिएजेंट सहित ट्रीटमेंट करिया द्वारा वी विल गेट CH3CO ONS4 ammonium acetate plus 2Ag plus 3 moles of NH3 plus water silver so NaHSO3 सहित ट्रीटमेंट करिया द्वारा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट CH3 COH CHSO3Na that is acetaldehyde sodium bisulfite acetaldehyde sodium bisulfite ओके तो ये थिला रिएक्शन सेक्शन टोटाल इंपोर्टेंट रिएक्शन कौन कौन रही ये चैप्टर ये सरीगला तुम प्रीवियस ईयर सब गुड़ा क्वेश्चन ठीक अच्छे आई होप समस्ते सेक्शन टाक भल भाव बुझी जो मानकर भी जदि कौटी डाउट रोचे प्लीज आस्क मी कौटी डाउट जदि रोचे ओके थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास थैंक यू आसंता काली ठू पिला माने तुम्हारा अलगा चैप्टर स्टार्ट हबो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स देयर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड आसंता काली ठू स्टार्ट हबो एई टाइम रे ही स्टार्ट हबो ओके थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास थैंक यू।